हाय गाइस, अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की जो एज अ बिगिनर आप अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। तो जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या स्ट्रैटेजी ही सब कुछ है। तो ये आप समझिए, पहले तो हमें अपना गोल समझना होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर गोल फर्स्ट एंड देन उस गोल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बेस्ट होना चाहिए हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ऑलवेज वेन एवर यू स्टार्ट डिफ्रेंशिएट योर गोल एंड स्ट्रैटेजी। पहले गोल्स क्या है आपका फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करने के लिए, उस पोर्टफोलियो के लिए आपका गोल क्या है, और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आप वो डिराइव कीजिए। आज हम कुछ ऐसे ही टॉप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की बातें करेंगे। तो जब हम अपने स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, जब जो भी हमारा गोल हो और हम जब उस किसी भी स्ट्रैटेजी को उस गोल के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी भी कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अप्रोच टू अचीव योर गोल विल डिपेंड ऑन द रिस्क एपेटाइट। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, अब वो डिपेंड करेगा आपके एज पे, क्योंकि जितना आप यंग होंगे उतना आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा रहेगा। जितना आप ओल्ड रहेंगे, सो फॉर एग्जाम्पल इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 60 when he's retiring, his risk appetite will be very low. If you watched our earlier videos, you will understand that whenever you're putting a portion of your portfolio into equity, वो जब आप ओल्ड हो जाते हैं तो वो पोर्शन कम होते रहता है। ऑलराइट, क्योंकि रिस्क एपेटाइट हमारा कम रहता है। वेयर एज जब हम यंग रहते हैं हमारा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा रहता है, बिकॉज वी हैव अ लॉट टू फॉल बैक ऑन टू। ऑलराइट, फिर हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, वो भी डिपेंड करता है कि हम किस स्ट्रैटेजी को उस पर्टिकुलर गोल के लिए अप्लाई करें। फिर हम बात करते हैं कि हमारा टाइम हराइजन क्या होता है। इफ़ वी हैव अ गोल, व्हाट इज़ आवर गोल। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर कि बहुत साल पहले, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट माई फादर व्हेन ही वाज माई एज और इवन यंगर, व्हेन ही वाज यंगर देन मी, तब वो जब फाइनेंशियल मार्केट्स में एंटर किए थे उनका गोल क्या था। तो कभी कभी क्या होता था कि वो ही वॉज अ वेरी गुड ट्रेडर ऑफ कोर्स, एंड जब वो ट्रेडिंग करते थे तो उनका वन ऑफ द गोल्स वाज, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स रिवैम्प द लिविंग रूम। तो उस अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता था और उस पर ट्रेड किया जाता था या इन्वेस्ट किया जाता था और उसके रिटर्न से वो रिवैम्प हुआ करता था। दिस इज एजेस अगो, ईयर्स अगो, दिस वाज हिज स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो आपका गोल क्या लॉन्ग टर्म है, क्या शॉर्ट टर्म है, उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे। नाउ स्ट्रैटेजी, एज आई सेड, डिपेंड्स ऑन योर एज. You can take higher risk at an early age, whereas you cannot afford to take a lot of risk when you are older. When I say older, I mean 50 plus or something like that. It also depends on how many dependents you have. So for example, when you're a bachelor, when you don't have any dependents, when you don't have a child, you have a higher risk appetite and the planning is simpler. Whereas when you have a family to take care of, when you have dependents, then the planning or the strategy to approach a particular investment is different. Okay? Then, of course, everything depends on what is your income stream. So how many income streams do you have? How much is your income? Again, I should remind you, jitna bhi income ho aapka, always try to save money and invest. दैट इज़ द मेन गोल। ओके, और इसके बारे में हमने पहले भी दूसरे वीडियोस पे बात किया है। अभी एक और फैक्टर होता है जिसपे हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिपेंड करता है, एंड दैट इज कॉल्ड द रिस्क प्रोफाइल ऑफ एन इंडिविजुअल। अब देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रोफाइलिंग इन रिस्क एपेटाइट. One is conservative, one is moderate, and one is aggressive. So you need to kind of know yourself कि आप किस risk profile में बैठते हो. Again, this goes without saying, if you are a younger individual, your risk appetite will be more aggressive than if you are, of course, at an age of 60, where it will be a very conservative approach to investment. Always remember, the higher risk you take, the higher return you get. Low risk, low return, high risk, high return. This is like a basic finance concept. ठीक है,
तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। मुझे याद है जब मैंने अपना फर्स्ट MS फाइनेंस का कोर्स के लिए यूके में मैं फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहा था, तो जो प्रोफेसर थे वो आए, उन्होंने ब्लैक बोर्ड में बड़े से लिख दिया, रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटर्न। ऑलराइट, सो द हायर रिस्क you take, the higher return you get. Now we are going to discuss various forms of strategies that you can use, apply in your life as a beginner. As someone who's starting out, these are things that you can compare कि आपके लिए कौन सा suitable है और क्या होना चाहिए। तो आइए हम कुछ investment strategies की बात करते हैं। So पहला है value investment. Value investment is a strategy where you're looking for investment in stocks which are available at discounted price than the market value. ठीक है, आप सोचिए एक स्टॉक का कोई वैल्यू होना चाहिए, उससे कम प्राइस में आपको मिल रहा है और आपने उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है और आपको पता है कि एक अच्छा कंपनी है और आप उसमें घुसना चाहते हैं या उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं. सो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट यू वांट टू अप्लाई. नाउ as an aggressive investor or as a young investor, as someone who's starting out, 80% of your equity investment should be value investment and 20% should be debt. Now we use fundamental analysis to kind of come out with ratios, to come out with calculations which give us an idea what stock is undervalued and we can get into that. So if possible, we could probably make a video on that as well. However, after fundamental analysis, you need to get into technical analysis, which is basically timing the market properly. So आपको ये तो पता है कि स्टॉक कौन सा अच्छा है, लेकिन उसको टाइम कैसे करें प्रॉपरली टू गेट इनटू द मार्केट एट द राइट टाइम जब वो अंडरवैल्यूड है. उसके लिए आप टेक्निकल एनालिसिस यूज कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास कोर्स भी है. इफ यू वांट टू, then go to www.engulfingbull.com and check it out for yourself. Second strategy है growth investing. Growth investing depends on various factors that contribute to such an analysis. The first is revenue and the second is profitability. You have to know whether a company is really growing and you can compare it with the peers. आप अपने उसके कंपेटिटर से कंपेयर करके एक इंडस्ट्री एवरेज क्या होता है और क्या एक पर्टिकुलर कंपनी उससे ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है, ज़्यादा रेवेन्यू ला रहा है. इफ़ येस, देन दैट इज़ a company that is growing and you should be interested in that particular company also. All right. So one example is that a stock is little undervalued, then it's industry average and aap usme ghuste ho, which is called the value investment strategy, right? And one here is that a stock is a little overvalued. मतलब वो already grow करना शुरू कर चुका है, अब आपको दिख रहा है इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा उसका वैल्यू हो गया है, little overvalued, but you're still wanting to ride that stock because you think the company is still growing. And yes, you can enter. Okay, so let's take an example where a stock is a little overvalued and you don't care about it, but it's because it shows growth. And yes, you can enter that stock. तो हमने जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट का बात किया था, वहां पे हम स्टॉक को डिस्काउंट में लेने की ट्राई कर रहे थे, अंडर वैल्यूड स्टॉक कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज. यहां पे हम बोल रहे हैं कि स्टॉक ऑलरेडी ग्रो होना शुरू हो गया है एंड नाउ आई कैन सी इट इज अ लिटिल ओवर वैल्यूड कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज, बट आई एम ओके टू बाय इट बिकॉज आई थिंक इट हैज ग्रोथ पोटेंशियल. When you are buying in this strategy, in growth investment strategy, you are more interested in the growth of the company rather than the discount of the company. So if you're interested in growth investing, the major allocation should be in growth stocks, mutual funds investing in growth stocks, and then minor allocation in debt funds. The main difference between value investment and growth investment is value investment may you understand the potential of a stock, that's a good stock, it is available in discount, and you enter it before it starts moving. So the strategy here is buy and sit tight. Whereas in growth investment, you can see the stocks have started moving, has started already performing, and then you get on the bandwagon and start investing in that particular
stock because that gives you more conviction कि हाँ ये चालू हो गया है, अब मैं इसको ले सकता हूं. The third strategy is called the income investment. Alright, here you are interested in investing in stocks that can give you steady income. Now steady income कैसे आता है? Steady income दो तरीके से आता है. एक interest income and दूसरा dividend income. Now interest income, of course, you can invest in bonds, debentures that give you interest income. And dividend के लिए you can invest in stocks that give you regular dividends every year or every quarter. Basically, an income investment is more for people who don't have a fixed source of income. So people who are retiring, elderlies who have retired or retiring, they want this source of investment because उससे उनका एक source dividend income या interest income आते रहता है. And this is an approach of conservative investment. Now अगर आपको ऐसे ही stocks pick करने हैं या ऐसे funds देखने हैं तो you can of course go on to iifl.com. This is my broker. This is the broker I use. And there you have Smallcase connected also. You can go to smallcase.com and check out different kinds of investment opportunities जो आप filter भी कर सकते हो in terms of कि कितना aggressive investment है, कितना moderate investment है, कितना लो या कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट है रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से. सो मेन काम ये है आपका कि आपको एट एन अर्ली एज में शुरू करना है इन्वेस्टमेंट्स. हमने आपके साथ 3 स्ट्रैटेजीज डिस्कस किए हैं. इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज विच इज वैल्यू इन्वेस्टमेंट, विच इज ग्रोथ इन्वेस्टमेंट एंड इनकम इन्वेस्टमेंट. इनकम इन्वेस्टमेंट इज नॉट फॉर यू इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट एट एन अर्ली एज. Value investment and growth investment, these 2 topics are for yourself. All right, so dig deep, get started, and get started immediately. And more importantly, start learning. Again, till next video, I'll see you later. Bye-bye.